Hello guys, welcome to Final Year. So today's video will be about fracture healing. जिसमें हम बात करेंगे stages in fracture healing of cortical bone, factors affecting fracture healing. Okay, so let's start with the stages of the fracture healing of the cortical bone. Stages जो है हमारे पास, these are stages of hematoma, stage of granulation tissue, stage of callus formation, stage of remodeling, stage of modeling. Okay. सो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे. Stage of hematoma. This stage lasts up to 7 days. When a bone is fractured, blood leaks out through torn vessels in the bone and forms a hematoma between and around the fracture. Okay. Then the periosteum and local soft tissue are stripped from the fracture ends. This results in ischemic necrosis. Okay. Then sensitization of precursor cells occurs. ये बोन है, जो फ्रैक्चर है, ये जो आसपास का जो एरिया है, इसके अंदर ब्लीडिंग और the periosteal soft tissues है, that will be stripped around. Okay. The next stage of granulation tissue lasts up to 2 to 3 weeks. Okay. In this stage, what will happen? That earlier these sensitized precursor cells were there. They will produce cells which differentiate and organizes to provide blood vessels, fibroblast, osteoblast, and fracture is still mobile. Okay. Next stage of callus formation. First sign of union visible on X-ray. Approximate time is 4 to 12 weeks. Okay. Mineralization of granulation tissue occurs. Okay. The fracture is not mobile. In last stage of granulation tissue, the fracture was still mobile. But in this stage, callus formation, fracture is not mobile. That means clinically it is united now. Okay. Then next stage is stage of remodeling. The stage of remodeling was formerly called the stage of consolidation. In this stage, the woolen bone is replaced by mature bone, which is a typical lamellar structure. Okay. This process of change in multicellular unit based, whereby a pocket of callus is replaced by a pocket of lamellar bone. मतलब कि क्या होता है, जो भी हमारे पास पहले कैलस बना हुआ था उसकी जगह एक लेमिलर पॉकेट जो है वो बन जाएगा. This is a slow process and it may take up to 1 to 2 years. Okay. Then outline of the callus becomes more dense and sharply defined. Okay. ये जो है callus formation जो हुआ था उसकी outline जो है dense होगी and sharply defined होगी. Okay. Stage of modeling. Stage of modeling formerly called the stage of remodeling. In this stage, the bone is gradually strengthened. Okay, and the modeling of endosteal and periosteal surface occurs. Then that implies that fracture site become indistinguishable from the parent bone. Okay, मतलब कि जैसी पहले हमारी bone थी वैसे की वैसे बन जाए. अच्छा, ये जो है अब बच्चों में ज़्यादा अच्छे से होता है क्योंकि बच्चों में हीलिंग जो है प्रॉपर ज़्यादा अच्छे से होती है, प्रॉपर होती है, एंड इट टेक्स सेवरल इयर्स टू कंप्लीट. ओके. दिस स्टेज इज मोर conspicuous in children with angulated fracture. It occurs to a very limited extent in the fractures in adults. Okay. Okay. तो ये हो गए हमारे स्टेजेस इन फ्रैक्चर हीलिंग ऑफ कॉर्टिकल बोन. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फ्रैक्चर हीलिंग को अफेक्ट करते हैं. तो उनमें है फर्स्ट एज ऑफ द पेशेंट. तो बच्चों में जो हीलिंग है वो फास्ट होती है बजाय कि एडल्ट्स के. टाइप ऑफ बोन, कि किस टाइप की बोन के अंदर फ्रैक्चर हुआ है हमारा. जैसे कि अगर फ्लैट और कैंसिलियस बोन जो है वो यूनाइट होती है फास्टर. ओके. फ्लैट एंड cancellous bone, these unites. Okay, I'll write that flat and
cancellous bone unite faster than that of tubular and cortical bone. Okay, then next जो है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर. तो स्पाइरल फ्रैक्चर्स यूनाइट फास्टर देन द ऑब्लिक फ्रैक्चर्स. ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड पैथो एनाटॉमी. ओके, देन फिफ्थ टाइप ऑफ रिडक्शन कि किस टाइप का रिडक्शन किया गया है उसको करते टाइम गुड अपोजिशन ऑफ द फ्रैक्चर रिजल्ट्स इन फास्ट यूनियन. ओके, at least half of the fracture surface should be in contact of optimal union in the adults. In children, fracture may unite even if bone are only side by side in contact. Okay, so ये हमारा था type of reduction. Then next हमारे पास जो है that is immobilization. So it is not necessary to immobilize all the fractures. जैसे कि अगर मान लो कोई फ्रैक्चर की मान लो फ्रैक्चर है रिब का या फिर स्कैपुला का, तो दे आर नॉट नेसेसरी टू इमोबिलाइज, दे एनीवे हील. बट सम फ्रैक्चर नीड टू स्ट्रिक्ट इमोबिलाइजेशन, दैट इज फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर, एंड हो सकता है कि उसके बाद में भी उनका हीलिंग ना हो. ओके, द नेक्स्ट है हमारे पास ओपन फ्रैक्चर्स. ओपन फ्रैक्चर्स ऑफन गो इनटू डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन. जो भी ओपन फ्रैक्चर होते हैं हमारे पास वो हो सकता है कि या तो डिले हो जाए उनकी हीलिंग या फिर नॉन यूनियन में भी जा सकते हैं. ओके, सो उसके बाद में हमारे पास में कंप्रेशन एट द फ्रैक्चर साइट. सो कंप्रेशन जो है वो compression enhances the rate of union in cancellous bone. In cortical bone, compression at the fracture site enhances rigidity of fixation and possibly results in primary bone healing. Okay, so these are the, so compression क्या करेगा हमारा enhance करेगा रेट को किसमें, cancellous bone में, जबकि जो हमारी cortical bone है उसके अंदर rigid जो साइड जो है fracture site enhances rigidity of the fixation and possibly results in the primary bone healing. Okay, so ये थे हमारे factors affecting fracture healing. इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से. तो so that's it for this video. Thanks for watching. Do subscribe.